going live. Oh. Hello everyone, all my lovely students. Welcome, welcome, welcome. What a lovely, lovely Saturday evening it is. I'm so happy. कल आया था आनंद प्रकाश और आज आए हैं सुप्रतीक चट्टोपाध्याय. I'm so happy because yesterday one student was going to AFMC, today one student is going to AIIMS Rishikesh, and there cannot be, bigger happiness for a teacher to see कि बच्चे इतना अच्छा कर रहे हैं. They want to be doctors from premier institutes of the country. So चलिए आज हम सुप्रतीक से बात करते हैं. One of my personal favorites of this year, although teacher के favorite students नहीं हो सकते, but even then one of my personal favorites for his humility and just because I absolutely adore his mother. तो इनकी मम्मी को मिली थी मैं, and I've become such a big fan of ma'am. So yes, let's get started. So over to you, Supratik. Welcome to Vedantu Biotonic, and tell us more about yourself. Thank you, ma'am. Good evening to everyone. Good evening, ma'am. And my name is Supratik, and I'm from Digboy, Assam. And I had cleared NEET this year with a score of 681 and an All India rank of 675. Wow. And Score I would 681, also like All to India rank share. of 675. Superb, 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 superb. And I would also like to share that this year I also cleared the KVPY exam with a rank of 1364, and I am also an NTSC scholar. And what else? Ma'am, I was the state rank 1 from Assam in NTSC stage 1. Oh, lovely. Oh, lovely. What is your चश्मे का number, Supratik? ये पढ़कर लगाए या टीवी देख के लगाए? Initially TV देख के लगा है. Correct. How excited are you, Supratik? It's a dream college. Any of the AIIMS are dream colleges, and you've cracked the NEET examination. You're going to a dream college. You're going to be a doctor. You've got the college. You've got a seat now. There's absolutely no stopping. How super excited are you? Yes, ma'am, I'm very excited because since the starting only, there was always there are so many videos on YouTube that colleges are such and such. And when I went for the reporting and first time I could experience the actual medical college, because before that I had only been to a local hospital. I had never been to a big medical college. And that was my first time inside any AIIMS. And when I saw the building and the rows of buildings, how big the campus was, how big it is, and the everything I saw on YouTube and everything which I see virtually, that came as a dream come true for me. That was real when I felt it, that it's such a big achievement to be just selected in like any of the top colleges, not only AIIMS, even the other top colleges. Correct. अच्छा ये बताओ, I mean, like, really, how goosebumpy it is. You know, you dream of it. And we don't know any of these, like athletes, like these competitions, जहाँ इतना competition होता है, 0.1 millisecond से bronze medal रह गया, silver medal से bronze medal हो गया, and these things like this, एक number से. So to work hard for this, I'm sure 8, 9, 10 से Supratik, you were dreaming. You wanted to do this, and I'm sure last 1.5, 2 years you were giving your 500%. क्या करना यही है, right? I'm going to be speaking in English so that majority of the students can understand, to getting this. So tell me that feeling, because I want you to inspire these kids कि यार मेहनत लगती है, कुछ नहीं होता. You know, so many times you would have felt छोड़ दे यार, give up. I don't know whether you felt it, but you feel that it studies, comes it's so boring. सब enjoy कर रहे हैं, you're studying. To living that, to going there, and like, at that time how do you feel? Do you feel कि यार success मिल गया, मेहनत सफल होगी? What is that? Describe that for me, please, Supratik. Ma'am, initially when I was in 9th and 10th, this was never my goal, pursuing MBBS and becoming a doctor, because Tell us I your was entire horrible. journey, Supratik. So next 5, 6, 7 minutes is all yours. Tell us your entire journey from where you thought कि मुझे करना है to this. Tell us this entire thing to us. बताओ. Yes, ma'am. Ma'am, initially when I was in 9th and 10th, this was never my thinking to be an MBBS doctor, because I was really horrible at biology. I was good at studying for school biology, but competitively, or you can say extra knowledge, I didn't have much of biology. But when I came into class 10, the perspective towards biology changed, because I was seeing that maybe maths is difficult, and I had the most interest in mathematics only. Really? And I had cleared,
maths Olympiad in class 9. It is still my favorite subject. I have cleared in class 9 and class 11. But biology is such thing, अगर आपने इतना भी पढ़ लिया, then उससे question करना is very easy. Correct. And maths में, even if you just study this much, the application of the thing is this much. So you have to work like 3 times, 4 times harder to get questions right in mathematics. Correct. So from that point, like I was saying that to score in biology in competitive exams, it's relatively easier. And also since then, my mother Honestly, had been yes. always telling me that I should pursue this course, MBBS. It was her dream and my dad's wish also. And when I joined in class 11 in school, then I was a bit confused whether to choose PCMB or PCM or PCB. So I ended up taking PCMB and I also gave JE this year and got a percentile of 99.04. And after taking PCMB, there was still a lot of conflict in my mind that should I do maths more, should I do biology more? And in class 11th, initially, it is really difficult to balance both of the things because I wasn't being able to give justice to the biology part. I was trying to jumble between both of these boats, and eventually I was going to fall at some point of time. So, So what do you think, Supratik? I want to cut you short here. See, yes, ma'am. you are a very different student. I'm sure you are a very blessed child in terms of 9th or 11th में मैंने maths Olympiad निकाला, NTSC scholar किया. I'm sure it is a lot of hard work, but it is also a lot of gift, divine grace and gift that you got the right teachers or you got the right people at the right time to help you. How difficult is it to help PCMB for an average student? वो बताओ. क्या देखो बहुत बच्चे होते हैं सुप्रतीक जो बोलते हैं फिजिक्स बिकॉज उनको ना क्लियर नहीं होता कि मुझे डॉक्टर ही बनना है या इंजीनियर बनना है बायोटेक करनी है क्या करना है सो वो पीसीएमबी ले लेते हैं. नाउ यू टेल मी रियल स्ट्रगल्स फ्रॉम एन एवरेज स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू कि क्या लेना चाहिए, डिसाइड कर लेना चाहिए कि दोनों नाव पे सवार होना चाहिए. मैम पर्सनली अभी अगर जैसे मैंने नीट पे फोकस करके नाउ आई एम गोइंग टू अ मेडिकल कॉलेज, तो मुझे ये लगता है कि इफ आई हैड टेकन ओनली बायोलॉजी इन क्लास 11 इट कुड हैव बीन मच बेटर because instead of taking mathematics, if I would have taken only biology, I would have given full attention to biology. Want to cut you again? Yeah. Did maths not help you in physics? Which is also एक और चीज जो बच्चे कहते हैं कि maths ने मुझे physics solve करने में help किया. Did that help? Yes, no, maybe. Yes, it did because the things which are there in 12th mathematics which are required in 11th differentiation integration, I already knew that by the time I was in 11th. So उस साइड ऑफ थिंग्स से तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ मुझे. बट अगर आप कोई कोर्स ऑनलाइन ज्वाइन करते हो इन 11th और एनी कोचिंग यू ज्वाइन ऑफलाइन ऑनलाइन व्हाटएवर, दे विल टीच यू दैट बेसिक मैथमेटिक्स. सो इट इज नॉट रिक्वायर्ड, लाइक दैट मच इज नॉट रिक्वायर्ड. एंड नीट पे तो उतना आता ही नहीं है. नीट पे तो उतना नहीं आता. आपको श्योर हो गया था सुप्रतीक कि मुझे डॉक्टर बनना है? मैम इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसका पीछे भी. 11th में आई वाजंट श्योर. And 12th, when I entered class 12, I still wasn't sure. Okay. And I had joined Vedantu in 2021 February, and I had given the scholarship test, VSAT, which correct. is there. जो चल रहा है आजकल भी होने वाला है. Correct. हाँ होने वाला है. So actually वो मैंने JEE का दिया था. Okay. And then one of the counselors from your Vedantu only had told me to decide. मतलब ऐसा नहीं है कि JEE and NEET दोनों कर सकते. Just decide JEE or NEET. And then my mom said that NEET would be the better one because we want you to become a doctor. And then I took the NEET course, and initially I was in a revision batch, then the 12th Sankalp batch, and then I had joined the topper spot. And still I was doing mathematics. At that point of time, I was still doing JEE questions, etc. But between that time, one of the Vedantu personal teachers had contacted me that your scores in the NEET tests are dropping a bit. So what is the reason? I said that I was simultaneously preparing for JEE and doing mathematics. So they said that please don't do that, stop doing that. And since that time that I stopped doing it, my scores went up and my performance in the NEET tests were much better. Especially I was doing very well in biology now, at least for the time being. Oh, lovely. In those so tests. This all is like one thing led to the other. एक से दूसरा हुआ, दूसरे से तीसरा हुआ, and then you yes, ma'am. Yes, you did that. Okay.
Now, yeah, coming back to that first story which I asked you, तो अपनी मेहनत देखना कि मैं 9, 10th, 11th, 12th से I'm sure Olympiads में NTSC में मेहनत करा, 11th, 12th में मेहनत किया. To when you went to that school, when you went to AIIMS Rishikesh with your parents, describe, मतलब जब आप पहली बार सपने को पूरा होते देखते हो, तो वो मेहनत जो इतने साल की होती है, I'm sure आपने sacrifice भी किया होगा सुप्रतीक. Yes, ma'am. बहुत कई बार पेरेंट्स भी तो वो कैसा होता है, हाउ इज दैट एंटायर थिंग, इज इट, मतलब क्या फीलिंग्स आती हैं, एंड व्हाई आई वांट यू टू टेल दिस सुप्रातिक, इज बहुत बच्चे मेहनत अभी कर रहे हैं बट अभी तक उनको Yes, रिजल्ट ma'am. नहीं मिला है, और आई व्हाट आई वांट टू नो थ्रू योर स्टोरी इज फल मिल जाएगा, तो बस करते चलो. सो आई वांट यू टू इंस्पायर देम, हाउ वाज योर थिंग, प्लीज टेल अस. Ma'am, I think it is important to take NEET as a competitive exam rather than as a career deciding exam. Because NEET isn't going to decide your career. It is going to decide how well you did in just a medical professional exam. So it is important to take NEET as a competitive exam rather than as a a career deciding exam. And also about that feeling part, ma'am, last year मतलब लास्ट 3-4 ईयर्स से मतलब मैं घर से एकदम निकला ही नहीं हूँ, कहीं वेकेशन, कहीं कुछ घूमने, भी कहीं नहीं नहीं, गया हूँ. किसी रिलेटिव के नहीं, कहीं नहीं. मैम लास्ट 4 ईयर्स के लिए मैं कहीं नहीं गया था बिफोर नीट. मतलब 9, 10, 11, 12 नो वे आई माय हैव गॉन. गॉड, तो माय गॉड, सो मच ऑफ. हाँ, ना मम्मी के घर भी नहीं गया, ना पापा के घर भी नहीं गया, किसी ने कहीं नहीं बोला नहीं, गया. मॉम डैड ने कुछ नहीं बोला कि चलो कहीं, यू नो. No, ma'am, they were very supportive, and that is something I really appreciate about my parents. Ki neither were they willing to go. कितने function हुए घर में, many things happened, but कभी नहीं. Mom and dad never they said कि you have to go or something. We have to go, and they were always supportive in that part. And जब इतने दिनों के बाद फर्स्ट थिंग तो आप लोग से बैंगलोर में मिलना हुआ, एंड उसके पहले मॉम के घर गया था, एंड आफ्टर दिस आई वेंट टू एम्स ऋषिकेश. तो इट वाज रिफ्रेशिंग कि इतना दिन बाद मतलब वर्थ इट. पहले मतलब बहुत ट्रिप्स होते थे हम लोग. कभी दिल्ली जाते, दिल्ली से नैनीताल गए, कभी साउथ में गए, मैसूर गए, इधर गए, लेकिन उस वो सब तो सब मतलब आई हैड गिवन इट अप. देन अभी सडनली फिर से थोड़ा घूमने का मौका मिल रहा है, चांस मिल रहा है, So and worth all the going to sacrifice. games. Wow. But Supratik, 4 years is a long time. कोई कहे ना मैं 6 महीने घर से नहीं निकला, मैं 2 महीने, तो but how did you, मतलब आप भी बच्चे ही हो यार, you are a child, you are a kid, मन तो, how did that, मतलब what did, from where did that motivation come, Supratik? Ma'am, first thing is that I means it was refreshing to go out and all, but usually I don't like traveling that much anyways. So मतलब कि I'm a bit of a homesick kind of a person, but uh, मेरा मन में यही था कि at the end of the day where I want to be, उस वो दिमाग में था कि आई वॉन्ट टू बी एन इंजीनियर और अ डॉक्टर. लेट्स से 9th में तो मुझे पता नहीं था वट एवर आई वॉन्टेड टू बी, बट लेटर व्हेन इट केम टू 11th एंड 12th वो दिमाग में था कि व्हाट आई वांट टू बी, वो फाइनल डे को देखना है. अभी मतलब अभी घूम के अभी ये लोगों को बता के कि आप क्या कर रहे हो, कितना अच्छा कर रहे हो, उससे बेटर है कोई कि फायदा आप नहीं है, हाँ. ये फाइनल फाइनल डे जब एग्जाम होते हैं, एंड आफ्टर द एग्जाम एट द रिजल्ट डे, then you can tell people that yes, I'm going to be a doctor at a reputed institute, then That's that, lovely. or going to be an engineer, or whoever is in whichever field they are, and they're going to be good at it, they're going to be great at it. So Yeah, that that's was so the nice. motivation. That's so nice, and it's all internal. कोई वीडियो देख के या कुछ देख कर मोटिवेशन नहीं आती. आई थिंक इट्स ऑल इंटरनल. Supportive parents, yes, a lot of kids are praising your parents and they're saying supportive parents are the best. Very nice. So Pratik, now if I come to subjects, there are two things in which medical aspirants have a lot of problem. Bio for most of them is, I will not say very sorted, but okay. But there are two things in Hmm. which they have a lot of problem. Number one is physics, and number two is, let us say, physical chemistry, and Hmm. specific ways to do organic chemistry and inorganic chemistry. Now Hmm. your score is like brilliant. मतलब वो नंबर भी 15-20 नंबर भी कैसे कटे, आई डोंट नो, एक आधा नेगेटिव हो गया होगा, एक आधा छोड़ गया होगा, योर स्कोर इज लाइक ब्रिलियंट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेल अस स्पेसिफिकली टू सब्जेक्ट्स, बट इन 3 चीजों में. सबसे पहले, सबसे पहली पढ़ाई कैसे करी, हाउ डिड यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, स्पेसिफिकली बताना, फिजिक्स का बताना, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक है, तो सबसे पहले पढ़ाई कैसे करी, सबसे इंपॉर्टेंट इन सब की. Hmm. नंबर टू,
इनके नोट्स कैसे बनाए, आखिर 6 मंथ्स के लिए स्पेसिफिकली बताना, लास्ट के रिवीजन। जैसे मान लो कोई बच्चा भी 12th में है, उसका 11th इतना स्ट्रांग नहीं है, तो उसने अभी क्या किया। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज हाउ डिड यू decrease your negative marks in these 3 subjects, yeah, these 3 parts. So first start with how did you study? Over to you. Ma'am, the first thing in physics is initially in class 11th, even from the starting of my class 9 and 10, the physics was a subject which I didn't like. I used to like mathematics, chemistry, and biology a lot. Physics अच्छा ही नहीं लगता था. हाँ, so I didn't, नहीं, physics अच्छा नहीं लगता था, even though I liked mathematics, but physics was like more of a concept-based thing, and those things I didn't used to like. So 11 में when I reached, and I always used to think कि my mathematics is good, so I'll do well in physics by using those mathematical skills. But at the end of the day मैंने देखा कि it's not helping me at all, because first the concept है, and if you don't understand the concept, then you'll be in a lot of trouble. Apply क्या करोगे? Correct. Yeah, so 11th में वो problem हुआ, and I didn't realize that. After reaching 12 and after studying at Vedantu from our physics sir, Vipul sir and Vinay sir, they, especially Vipul sir had always told us that focus on the concept. तुम्हारा मैथमेटिक्स अच्छा है, हो जाएगा. मैथमेटिक्स सबका मतलब नीट में उतना हार्ड नहीं आता. जस्ट फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट, एंड इफ यू कैन गेन द कॉन्सेप्ट फ्रॉम माय क्लास, देन you would be able to do well in the mock tests which are happening. So physics के लिए यही है कि many people think it is all about numericals, but the first thing is that concept based studies करना है physics में. Second thing is that numericals भी solve करना है, but you have to do it efficiently. Concept based studies को थोड़ा और explain करो सुप्रातिक. जो बच्चे अपने आप पढ़ रहे हैं, कोई पढ़ रहे हैं, concept based studies कैसे करें? What can they do? मैम, अगर कोई चैप्टर में आपको बहुत प्रॉब्लम्स आ रहा है, suppose if there is a particular chapter like there is rotational mechanics, let's say, and लोग सोचते हैं कि उसमें बहुत न्यूमेरिकल्स है and there is a lot to memorize, even center of mass and those things, but the thing is वो chapters को अगर आप एक बार अपने टीचर से पढ़ लिए, that is one thing, and they are going to give you some concepts which you are going to inculcate. The second thing is reading from a standard book. Now, this book can be your coaching module, your H.C. Verma, your D.C. Pandey, your even NCERT. I am including NCERT भी. And third thing is कि जिसने भी suppose इस second reading में NCERT नहीं पढ़ी, उसको third reading में NCERT पढ़ना है उसका, मतलब third चीज तो करना है. And after these three things कि देखो आपके concept कहाँ पे, is it clear or not, और how much percentage is clear, और कितना मतलब पढ़ते थे सुप्रातिक कि हफ्ते में कितना आपने डाउटफुल 3-4 दिन बनाए थे जब फिजिक्स पढ़ते थे, कैसे करते थे फिजिक्स? मैम, पर्टिकुलर टाइम टेबल आई डिडंट हैव, बट आई यूज्ड टू इंक्लूड ऑल द 3 सब्जेक्ट्स एट लीस्ट वंस. यस मैम, एवरी डे. तो सुप्रातिक, अगर आप रोज तीनों सब्जेक्ट्स पढ़ते थे, आप स्कूल के साथ कैसे मैनेज करते थे? मैम, मैनेज तो करना पड़ता था. 11th में तो कोविड था, सो उतना स्कूल नहीं हुआ, इतना हेक्टिक नहीं था 11th में. लास्ट में फिर भी जाना पड़ा स्कूल, एंड 12th में तो और भी हेक्टिक था, मतलब स्कूल जाना पड़ा, एंड प्लस आई वाज द हेड बॉय ऑफ माय स्कूल, सो मतलब कि जाना तो पड़ेगा. रिस्पांसिबिलिटी कभी-कभी हो जाता था. यस. Yes, and so I had to attend the school. So after attending the school, coming back to home, I had like around classes also, the Vedantu classes, and then at night. So I am a night person. I had shared with you previously also. So I used to study till 3 or 4 in the night, sometimes 5, sometimes 6. So what happened is, first I would study what was taught in the classes. I would revise that, and then something in continuation with that, and something separately. So 3 things, 3 चीजें हो गया. फर्स्ट जो पढ़ा है उसको थोड़ा रिवाइज किया. सेकेंड थिंग इज कि a continuation of what was taught means questions. A continuation of the things means some additional concepts from some books which teachers had told, or questions like question practice of whatever was taught. And the third thing is additional खुद से which you are studying at that point of time. कुछ रिवाइज like it may or may not be related to the class. करेक्ट. Yeah. So वो था कि, and concept based learning में
जो मैंने 3 चीजें बोली है उसका सबका न्यूमेरिकल एप्लीकेशन, द फोर्थ थिंग इज। एंड मैम एनसीईआरटी से प्रैक्टिस करना चाहिए, क्वेश्चन भी, एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइजेस वो सब भी प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि उससे क्वेश्चन आता है। मैं पर्सनली एग्जांपल दे सकता हूँ, मतलब मैंने रोटेशनल मैकेनिक्स, आई थॉट दैट वो मेरा वीक था, तो मैंने उसको 3-4 बुक से सबसे पढ़ के रखा था कि कुछ भी हो जाए वहां से क्वेश्चन आएगा तो करेक्ट करना है, क्योंकि मैंने इतना वैरायटी कर लिया था। लेकिन मैंने क्या किया, स्टिल जस्ट बिफोर द एग्जाम आई स्टडीड फ्रॉम एनसीईआरटी एंड द एग्जाम्पल्स एंड एक्सरसाइजेस आई डिड फ्रॉम एनसीईआरटी। एंड जो उसका लास्ट या सेकंड लास्ट एग्जाम्पल था या फोर्थ एग्जाम्पल, वो डायरेक्टली नीट में आ गया, कट कॉपी पेस्ट फ्रॉम एनसीईआरटी। हाँ, और मुझे आंसर भी पता था, मतलब मुझे सॉल्व करने का भी जरूरत नहीं था, मुझे आंसर भी याद था। तो ऐसी चीजें होती है कि आपको एनसीईआरटी के एग्जांपल्स, इवन एग्जाम्पलर, सिंस इट इज एनसीईआरटी पब्लिकेशन, तो ये चीजें तो करनी है, मतलब कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ये, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उससे बेटर तो कोई सोर्स ही नहीं है। करेक्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बेटर कोई सोर्स ही नहीं है, सही बोला, एग्जैक्टली। एंड इवन फॉर नीट एंड इवन जो जेई के जो नए वाले हैं वो उतने हार्ड नहीं है, फिजिक्स और केमिस्ट्री, तो वो इजी आ रहे हैं, तो उस, और वो एनसीईआरटी बेस्ड भी आ रहे हैं, मतलब उनको दैट्स अ प्रैक्टिस कर गुड थिंग। सकते हो आप, यस यस। हाँ, तो उसके तो कितने सारे पेपर है, 28 या कितने पेपर होते हैं, करेक्ट तो करेक्ट। हाँ, तो वो अगर आप आप नीट के सारे कर लो, जेई के जो 4 अटेम्प्ट वाले साल था उसका कर लो पूरा, और नया वाला कर लो, तो हो ही गया आपका। एंड दिस ईयर नीट हैड 3 पेपर्स, आप वो 3 पेपर कर लो, देन यू विल आल्सो गेट एन आइडिया, सिंस एक री नीट भी हुआ एंड अब्रॉड पेपर भी था। करेक्ट सो करेक्ट। सो आप पहले तो प्रीवियस ईयर सब देख लो एंड पैटर्न आप लोग देख लो, सो दैट इज द पॉइंट कि कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग कैसे होता है, एंड देन एप्लीकेशंस। Perfect. Now come to chemistry. For similar thing, how did you go about chemistry? How did you tackle chemistry? Go one by one. Go inorganic, organic, physical. Chalo. Yes, ma'am. So when we come to 11th first, there is physical and inorganic, mostly. Chemical bonding है, and then equilibrium है, states of matter है, so that is physical and inorganic आपका चलेगा। Correct. And last में organic आता है, so organic के साथ क्या है, बहुत जगह में ignore हो जाता है, 11 में पढ़ाते भी नहीं है। Correct. And so since मेरा 11 में ऑफलाइन था, and मतलब सिलेबस कंप्लीट भी नहीं हुआ था, मतलब I don't want to speak ill of anything, but syllabus complete नहीं हुआ था, and organic was very weak for me. So physical complete कर लिया था मैंने, but equilibrium मैंने छोड़ दिया था, मतलब एकदम छोड़ दिया था, क्योंकि lectures भी complete नहीं हुए थे उसके। And then inorganic I had studied from NCERT. So फिजिकल का फर्स्ट थिंग इज दैट कॉन्सेप्ट फिजिक्स जैसा ही है उसमें एंड थिंग इज नीट में फिजिकल के उतने न्यूमेरिकल नहीं आते जितना जेई में आता है। जेई में जितने न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो सारे फिजिकल केमिस्ट्री से आते हैं मेनली, मतलब 10 क्वेश्चंस में 5 और 6, बट हाँ, और जो नीट में आता है उसमें उतना मतलब मैथमेटिक्स इन्वॉल्व होता ही नहीं है, लिटिल बिट बट मोस्टली इट इज कॉन्सेप्ट बेस्ड। एंड so उसमें आप पहले उसमें सेम थिंग है, फिजिकल केमिस्ट्री treated same way as physics, learn the concepts first and then go to the numericals and prepare the formula sheets like in physics. Correct. You and did practice as much as you can, जितने previous year questions कर सकते हो, जितने यहाँ के questions कर सकते हो। Correct. Yes ma'am. And for inorganic तो इनऑर्गेनिक ना, मैं बच्चों को हमेशा कहती हूँ कि एनसीईआरटी से बाहर एक भी वर्ड नहीं आता है, एनसीईआरटी के नोट्स बनाओ, बट टेल मी हाउ टू कन्वर्ट दिस एनसीईआरटी इनटू नोट्स, कैसे याद रखे वो एक्सेप्शंस, इतनी बच्चे भूल जाते हैं, वो व्हाट वर योर हैक्स और टिप्स दैट यू हैड? मैम इनिशियली तो मुझे भी याद नहीं रहता था, फर्स्ट रीडिंग में आई थिंक किसी को याद नहीं रहता है, करेक्ट, इट्स लाइक कोई याद नहीं रख सकता है, बट सब्सिक्वेंटली आप रिवाइज करते जाओ एंड टेस्ट में जो आप मिस्टेक्स कमिट करते हो दैट इज अ गुड थिंग, बिकॉज वो आपको याद रहेगा। सो जितना भी मिस्टेक्स कमिट करना है अभी कर लो, नीट में नहीं करना है। दैट रिमाइंड्स मी सुप्रतीक, आफ्टर दिस टेल मी how much were you giving test and how were you analyzing after chemistry? We'll come to testing also. हाँ बताओ, continue. Yes ma'am. So inorganic का मतलब NCERT को 5 or 6 times आप रिवाइज करो, even more than that, जितना बार कर सकते हो, डेली थोड़ा करके उसको रिवाइज करो, especially P block, S block and those chapters where especially the uses of the elements also it is something which is ignored in some of the previous year questions,
means that part is not usually asked, but it can be asked since it is part of NCRT. So in the newer papers, they will try to make different questions from NCRT, so the users part can be asked. Correct. And try to make points of the users part instead of like memorizing. Point wise, अगर आप कहीं पे jot down कर लोगे, then you will be able to do Did you also stick better. like कल हम आनंद से बात कर रहे थे तो आनंद ने अपने पीछे की दीवारें दिखाई, आनंद ने अपने नोट्स बनाए, मतलब मेमोराइज करने के लिए फॉर्मूलाज हो गए, Yes, फॉर्मूला शीट. व्हाट वाज योर हैक? क्या करते थे इतनी सारी चीजें ताकि याद रह जाए? बार बार रिवीजन साइकिल चलाते थे, दीवारों को रंगीन कर दिया था. व्हाट वाज इट? मैम इनऑर्गेनिक के लिए तो नहीं किया था वो. मैं इनऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी में हाईलाइट कर लेता था and उसी को बार बार लाइक लास्ट 1 मंथ नीट के पहले और उससे भी पहले लास्ट 3-4 मंथ्स में इनऑर्गेनिक, शायद इनऑर्गेनिक ही वो चीज है जो मैंने सबसे ज्यादा पढ़ा है, क्योंकि वो भूल ही जाता है, मतलब वो भूलते ही हैं सब लोग. तो उसको बार बार बहुत फ्रीक्वेंटली रिवाइज करना है, स्पेशली एट द एंड, क्योंकि पहले आपने याद किया, आपको याद है, वो कोई नहीं पूछेगा लास्ट में आपको याद है कि नहीं. वही सबसे वही आपको, इम्पोर्टेंट है. करेक्ट. हाँ हाँ, वही इम्पोर्टेंट है. एंड बायोलॉजी का भी वही है, जो मतलब याद नहीं होता है चीजें, वो आपको लास्ट के टाइम में आपको मेमोराइज कर लेना है, चाहे आए नहीं आए, गलत है रॉन्ग है, जो भी एनसीईआरटी में लिखा है उसको आपको एज इट इज मेमोराइज कर लेना है. हाँ, तो वही है मैम इनऑर्गेनिक का. एंड प्रैक्टिस के लिए फिर से जो वो लोग कहते हैं कि इनऑर्गेनिक में भी कुछ बाहर से आपको पढ़ना है, सम पॉइंट्स याद करना है, वो प्रीवियस ईयर में है, वो प्रीवियस ईयर में मिल जाएगा आपको. सारा उसके अलावा करने की जरूरत ही नहीं है. जस्ट डू योर एनसीईआरटी एंड डू योर 15 ईयर प्रीवियस ईयर, मोर देन इनफ. More than enough. And even like if you still want to do something more, like don't study JDD or etc., those are so vast books. Yeah, don't do that. Even like JE students may not be doing those these days. So what you can do is, even if you want more knowledge, go through the JE papers. Even if you like want more knowledge, like older JE papers, even if you want more knowledge for inorganic. And for organic, the third part and the final part, ऑर्गेनिक मैम 11th में मतलब कि मतलब क्लियर नहीं था. आई हैड जस्ट something happened to your camera. Now it's working. I just memorized the points. I had just memorized the points of inorganic. This is better. This is better. Yes. Yeah. So I had memorized the points of organic, but still I wasn't clear. I had memorized few reactions, but उससे अच्छा नहीं हुआ, मतलब टेस्ट में भी अच्छा नहीं हुआ. सो व्हेन आई केम टू 12th बनाए, या जो नेट पे कोरा पे इधर उधर निमोनिक्स मिलते हैं, उन निमोनिक्स से किया, या जो आपके टीचर ने? नहीं मैम, निमोनिक्स मैंने यूज बायोलॉजी में ही किया, मतलब मोस्टली. एंड एज सच केमिस्ट्री के लिए निमोनिक्स मतलब आई डोंट थिंक इट्स यूजफुल. अगर किसी के लिए यूजफुल है, इट्स अ सेपरेट थिंग. ऑर्गेनिक कुछ भी आपने याद रखने के लिए कुछ भी वैसे वो निमोनिक्स वगैरह नहीं बनाया? यू अंडरस्टूड द कांसेप्ट एज इट इज? Ma'am, I'm coming to that. In class 12, Vedantu, I had joined. So, Govind sir, our chemistry teacher, he had taught us GOC of class 11. क्योंकि हमारे बैच में ऐसे था कि बस 2-3 लोग को GOC क्लियर है, लाइक हमें भी GOC क्लियर नहीं है. मोस्टली स्टूडेंट्स को GOC क्लियर नहीं है. उनको पढ़ा नहीं पढ़ा, तो उनको GOC 11th का पूरा पढ़ा के, देन 12th का भी GOC जो है पढ़ा के, then he came to the 12th, जो मतलब reaction parts हैं, alkyl halides हो गया, then alcohols हो गया, and then the rest parts. So 11th का totally sir ने पढ़ाया, तो उसी वजह से हम लोग का organic chemistry improve हो गया, much improve हो गया. and मुझे especially जो मतलब नीट के सब्जेक्ट है उसमें ऑर्गेनिक में ही सबसे ज्यादा इंटरेस्ट आता था. सो मैं उसको इंटरेस्टिंग, मुझे तो खुद जब मैं पढ़ रही थी, वन ऑफ माय फेवरेट सब्जेक्ट्स वाज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. एंड उसमें क्योंकि एक्स्ट्रा नॉलेज मैम एक्वायर करने के लिए इतना है, लाइक मैंने खुद सोलोमन्स एंड फ्रेल स्नाइडर्स पढ़ी है. प्लीज जो भी सुन रहे हैं मुझे मत पढ़ो, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम. या इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम. इट्स अ बुक फॉर जेईई एडवांस, सो प्लीज डोंट स्टडी इट एनीवेज. सो वो सब भी पढ़ा है मैंने जस्ट फॉर द नॉलेज, क्योंकि एक्स्ट्रा आपको जिसमें इंटरेस्ट है, आप उस अगर आप अपना ब्रेन का वो नीड को फुलफिल नहीं करेंगे, तो आप बेसिक्स को भी भूल जाएंगे. मतलब देयर इज अ नीड कि देयर इज अ क्यूरियोसिटी इन योर माइंड कि इतना हमें, वी नीड समथिंग मोर, वी नीड समथिंग एक्स्ट्रा गोइंग इन देयर. सो आई स्टडीड फ्रॉम देयर एंड concepts were built then in organic chemistry, and then the formula part, reactions part. मैं कमेंट जैसे कॉन्सेप्ट पढ़ा आपने, बनाया,
फिजिक्स में यस मैम। कि आपको कितने दिन तक याद रहता था सुप्रतीक? और मतलब और उसके बाद आपको लगता था कितने दिन बाद वो क्रम्बल हो रहे हैं कि आपको दोबारा रिवीजन, हर चीज में आपने कॉन्सेप्ट बच्चे कमेंट सेक्शन में कह रहे हैं कि वो भूल जाते हैं। तो व्हाट आपका रिवीजन साइकिल कितने दिन का होता था सुप्रतीक? आई मतलब विल आपको से कब मैम, उसके लिए दोबारा पढ़ना पड़ता था? आपने हफ्ता पहले पढ़ा फिर आपको लग रहा है भूल गया, वो भी टेल दैट आल्सो। जिस दिन पढ़ा उस दिन एक बार रिवाइज किया, ठीक है, दैट इज डन। मतलब उस दिन देन कैसे रिवाइज किया? रात को आप सोने से पहले आपने 1 घंटा रिवीजन के लिए दिया यस होता था मैम, एवरी डे? यस मैम, रिवीजन के लिए। सो उस वे में एक बार रिवाइज किया, देन आई केप्ट इट। नेक्स्ट डे उसको टच नहीं करना है, नेक्स्ट डे उस पर क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट डे डोंट टच और अगर थियरी बच गई द तो मतलब अगले दिन थियरी खत्म करके या फिर एमसीक्यू करो? या डोंट टच द थ्योरी, देन यू सी दैट एमसीक्यूज में हमें कितना याद है। ठीक है। एंड रूहानी मैम भी आपके साथी है, रूहानी मैम को भी पता है, रूहानी मैम भी हमें ये बोलती थी कि फर्स्ट रीड, नेक्स्ट डे डोंट रीड, जस्ट प्रैक्टिस एंड सी व्हाट यू कैन रिटेन फ्रॉम द फर्स्ट डे, एंड आफ्टर दैट थिंग इज डन, देन एनालाइज व्हाट यू डोंट नो और व्हाट यू कांट रिमेंबर, ठीक है। एंड उसको आप सेपरेटली नोट डाउन कर लो एज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और हाईलाइटेड पॉइंट्स, जो भी मतलब आपको याद रखना है कि वो मुझसे नॉर्मली That याद नहीं brings हो me to रहा। another question. Where did you make your notes? Did you make your notes in NCRT or did you make a separate copy for your notes? Ma'am, organic, I made a separate copy. Okay. For inorganic, in the NCRT. Okay. NCRT में. And what about मतलब physics? and physics, I made a separate copy, and I made it in a like extended form. उसमें काफी चीजें थी, like even some things which are not required, like questions भी है उसमें, मतलब many things are there. And at the end, like last 6 months के लिए मैंने separate formula sheets बनाना start कर दिया था, Oh, बहुत सारी lovely. Oh, lovely. formula sheets बनाए हैं। So Flyers, and like papers में आपने formula sheets बनाना शुरू कर दिया? yes, ma'am. And coming to that organic part, which I hadn't finished, the final part is that organic chemistry में then the last part is about reaction याद करना है. So try to memorize the reactions. Reaction sheet भी fine है. Reaction sheet is also good method. But what Govind sir had told us that एक पेज उठाओ एंड आपको मतलब कि सबस्ट्रेट पता है, यू आर टेकिंग एन अल्कोहल, यू आर टेकिंग ए बेंजीन, व्हाटएवर यू आर टेकिंग, देन आपको उस रिएजेंट्स, आपको आप खुद एक रिएजेंट लिखो, उससे आपको क्या प्रोडक्ट बनता है आप उसको लिखो, प्रोडक्ट को लिखो, एंड उस प्रोडक्ट को यूजिंग एज सबस्ट्रेट, देन सोचो कि रिएजेंट से नेक्स्ट प्रोडक्ट बनाओ। ऐसे ऐसे उसमें आप घूमते रहो पूरे पेज में, कि आप एक मेज बनाओ अपने लिए कि ऑर्गेनिक का। करेक्ट। हाँ, एंड वो आपको रेडीमेड भी मिल जाएगा, मतलब ऑनलाइन सर ने हमें रेडीमेड भी दिया था एक, एंड सर ने खुद क्लास में भी बहुत सारे बनाए हैं, तो वो आपको रेडीमेड भी मिल जाएगा, आप खुद से भी बना सकते हो। इट इज बेटर टू मेक बाय वन, जस्ट टेक समथिंग, स्टार्ट फ्रॉम देयर एंड कीप गोइंग एंड एक्सप्लोरिंग योर नॉलेज, एंड व्हेनेवर यू स्टॉप कि उस सबस्ट्रेट से आपको पता चल रहा है कि मुझे नेक्स्ट बनाना नहीं आता, then search it up. That means you can search in Google, you can search in your books that using this product as substrate, what more reactions are there. Correct. Preferably stick to NCRT. Preferably in the last 6 months stick to NCRT for this kind of thing also. समझ गए। That's nice. Now tell us something about tests. How? Yes, ma'am. Yes, कैसे? Did you ever, मतलब मेजोरिटी ऑफ द बच्चों को लगता है अभी तक तो मेरा सिलेबस खत्म नहीं हुआ, अब मैं टेस्ट कैसे दूं, हाउ विल आई स्कोर, हाउ डिड यू स्टिक टू अ पैटर्न, डिड यू एवर मिस योर टेस्ट, या आपका ऐसा था कि मैंने एक भी टेस्ट मिस नहीं करना? टेल अस समथिंग अबाउट दिस एंटायर थिंग। Ma'am, 11th when I had joined in an offline coaching, I wasn't at Vedantu, so I gave their first 3 tests, and then उसके बाद मैंने सारे मिस कर दिए till the end. अच्छा। बिकॉज आई कुडंट गिव, उन्होंने भी नहीं पढ़ाया था, सिलेबस खत्म नहीं हुआ था, मैंने खुद से भी मतलब कि खत्म नहीं हुआ था, तो वो हो गया कि वो तो चलो गया, दैट फेज वाज गॉन कि टेस्ट नहीं दिया। Then 12 started, and when I was in Sankalp batch, then topper squad, then I used to give tests regularly. We had fortnightly tests. आपको पता ही है 15 days में या 2 weeks में one test होता है, हर 15 दिन में। यस yes, so वो टेस्ट था, and I was giving that continuously, वो तो regularly था, and then full syllabus test, the Eklavya program is there, then they start giving you full syllabus test later on. Correct. So उसमें बहुत problem आएगा, because there is a full syllabus
एंड आप उससे पहले सब कुछ रिवाइज नहीं कर सकते हो. करेक्ट यू कांट रिवाइज एवरीथिंग. करेक्ट सो उसमें मैं क्या करता था, जो भी मेरा वीक था उसके पहले एक एक करके, मतलब मैंने वीक टॉपिक्स का एक लिस्ट बना ली. करेक्ट उसमें मॉम ने भी मुझे बहुत हेल्प किया. मॉम का एक डायरी था एंड शी यूज्ड टू राइट. उसमें उसमें मॉम अपना विश के थिंग्स लिखते थे, कॉलेजेस ऑफ चॉइस, things to ओह study, things like that. And so uh, उसमें 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 मॉम ने मुझे बोला था कि राइट डाउन द थिंग्स विच यू आर वीक इन. एंड मतलब एक दिन नहीं, क्योंकि एक दिन में तो आप कंप्लीट नहीं कर सकते पूरा चीज. वीक ऑन द वीकली बेसिस फिनिश द टॉपिक्स विच यू आर करेक्ट वीक इन. करेक्ट सो फिजिक्स में आई थिंक 6 चैप्टर्स मैंने नोट डाउन किया था. एंड इन केमिस्ट्री लाइक environmental chemistry and etc. I didn't memorize those, so I later on करेक्ट memorized those. And if possible, I'll show you the diary. I could ask mom and show no show yesterday Anand also showed his notes. Show, the kids will be really happy. yeah, and मैम उसमें बहुत कुछ मोटिवेशनल भी लिखा है. मॉम इज द वन बिहाइंड ऑल दिस. मतलब मॉम वाज Wow वेरी सपोर्टिव राइट फ्रॉम द. इस पे तो देखिए, इस पे लिखा हुआ है, मतलब इस पे ऑलरेडी कोट्स लिखा हुआ है बहुत करेक्ट मैं सारे. देख पा रही हूँ. यस यस इसके ओह बाद यहाँ पे नोट्स है. वाओ हाँ, कोट्स है, मतलब कि मोटिवेशनल कोट्स है. देन मॉम ने कॉलेजेस के नाम लिखे हुए हैं, एम्स दिल्ली से शुरू करके सब कुछ, एम्स ऋषिकेश, सब कुछ मॉम ने लिखा है. एंड हाँ oh lovely एंड उसके बाद ये देखिए मैम, ये चैप्टर्स के नाम, सब टॉपिक्स के नाम, ये सब मॉम की हैंडराइटिंग है, करेक्ट एवरीथिंग. करेक्ट एंड ये तो बस चैप्टर वाइज. एंड दिस इज टेस्ट का सिलेबस भी मैं लिख के रखता था. मॉम बोलती थी दिस इज टेस्ट सिलेबस हम लोग का, वेदांतों का. कि कब कब टेस्ट है. हाँ हाँ हाँ, ये भी है, ये है. हाँ, टेस्ट सिलेबस. उसके बाद हाँ, इवन लाइक एग्जाम्स के लिए सेपरेटली, केवीपीवाई के लिए भी कुछ कुछ टॉपिक्स मुझे सेपरेटली पढ़ना था. एंड ये मैम स्कोर्स का भी है, ये मेरा केवीपीवाई का है स्कोर्स का लिस्ट, सब कुछ. मतलब अलग अलग टेस्ट सीरीज दे रहा था, तो सबका सबका मम्मी ने. ये नीट वेदांतु के टेस्ट का है, ये वाला. ये आप देखिए टेस्ट कोर्स सब. कि कब कब ओ वाओ कि पूरा कितना हो रहा है एकलव्य के टेस्ट भी. वाओ वाओ सो देयर वाज अ हाँ लॉट ऑफ तो इन्वॉल्वमेंट फ्रॉम योर मदर्स साइड एंड फादर्स साइड एज वेल. या एंड बिफोर द एग्जाम्स आल्सो लाइक केवीपीवाई आ रहा था, तो आपको टॉपिक वाइज क्या क्या डिस्कस करना है. अल्टीमेटली एग्जाम गॉट पोस्टपोन टू 22 मई. करेक्ट एंड वो करेक्ट मतलब वो बहुत बाद में हुआ, तब तक सिलेबस खत्म ही हो गया था. बट उसके पहले की रिवाइज करना है क्या क्या, पूरा पूरा लिस्ट है, एवरीडे क्या रिवाइज करना है. मैंने खुद लिखा है, मॉम ने बोला था भर के रखो. वाओ सो मम्मा knows all this physics chemistry and everything. क्या टॉपिक्स हैं क्या हैं. मैम मुझे तो लगता है वो कोई नीट एस्पिरेंट को गाइड भी कर सकती है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे. This I'm is just joking, but no, she actually, can. I've met her. She is so amazing. This is so nice. This is so nice. This is. I mean, that's the reason And why Supratik आपको शायद friends की जरूरत ही नहीं पड़ी, because your parents were so involved in your preparation. yes, ma'am. Yes, ma'am, they were, and especially mom's side, because she wanted me to get into an AIIMS or be a doctor. And उनका मतलब ये था कि she wanted to get me into a very good college, like be it AIIMS, be it any college, a very good college, preferably AIIMS. Wow. एंड उसके 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 बाद में मैंने जो फाइनल टेस्ट में दे रहा था, मैंने प्रीवियस इयर्स का भी नोट करके रखा है. इफ आई एम एबल टू शो इट टू यू. हाँ दिखाना वो भी. यस मैम, आई ट्राई टू शो इट टू यू इफ इट्स पॉसिबल. एंड And in yeah, after and you came number to of times Vedantu, revised was, show me. suppose this is the chapter EM waves. ये Okay. चैप्टर है EM waves. Okay. ये दिख दिख रहा रहा है है. हाँ दिख EM रहा है waves. हमें. Yes, introduction, displacement, current. Yes. और पेज का इस साइड में है नंबर ऑफ टाइम्स रिवाइज्ड. Wow. तो +2 मतलब कि पहले जो किया था उसके साथ अभी +2 हुआ, मतलब अभी और 2 बार रिवाइज किया. Wow. तो इतना मतलब ये डायरी मतलब कि पूरे नीट का मतलब इसमें इंफॉर्मेशन एंड एवरीथिंग है. ये डायरी इज द मेन सोर्स ऑफ माय प्रिपरेशन, आई विल से. Correct. मींस And that makes it ऑर्गेनाइजिंग योर very प्रिपरेशन. मतलब बहुत it's very what do you say, easy to manage also कि अच्छा ये कर लिया, everything is in one point, so it's very well managed also. यस मैम. तो एंड आई after you थिंक came वो हाँ सबको बोलो. मेंटेन करना चाहिए. करना चाहिए. Yes
yes. So after you came to Vedantu Supratik, you didn't miss any test. Then you gave all the tests regularly. Yes, ma'am. Super awesome. Super And awesome. those were helpful also because एकलव्य के जो फर्स्ट फुल सिलेबस टेस्ट स्टार्ट हुए उसमें मुझे 517 मिला. दैट वाज द लोएस्ट 517. मेरा अभी तक का स्कोर. हाँ 517 अभी तक का किसी भी मॉक टेस्ट में मेरा लोएस्ट था. That would have been like, oh my god. हाँ ओ माय गॉड. उस दिन मतलब घर पे भी मॉम भी बहुत डिसअपॉइंटेड थी, मैं खुद डिसअपॉइंटेड था. एंड मम्मा ने लास्ट दिखाया टेस्ट अपना जो मैंने दिया, disappointment? Did she show her disappointment or did you come to know that she's disappointed? या शी इज वेरी वोकल अबाउट इट. She's she'll tell you Supratik पढ़ता नहीं है like that, whatever she has to say. नहीं पढ़ता नहीं है. शी न्यू कि क्या हो रहा है उसमें. 11th का भी था ना. शी न्यू कि 11th इसका वीक है. So then I kept on focusing on the 11th part, improving physics, chemistry, biology, and जो लास्ट वेदांतु पे मैंने मॉक टेस्ट दिया था उसमें मेरे 700 थे. Wow. So that jump from 517 to 700, that was quite significant for me. Did you ever feel like बहुत हुआ, I'm done with it? मैम वो फीलिंग तो सबको आती है और वो रात को आती है कि बहुत हो गया और मतलब कि ये पूरा दिन मतलब कि कितना पढ़ेंगे और मतलब बहुत हो गया. बट वो है कि अभी वो 6 मतलब अभी जैसे नेक्स्ट नीट 23 है. सो आई थिंक या 6 मंथ्स इज रिमेनिंग. सो बस वो 6 मंथ्स ही है, उसके बाद एंजॉय करना है. सो एंजॉयमेंट का भी बोल देता हूँ. लास्ट 3 मंथ्स मैंने नहीं पढ़ा है कुछ. इट्स स्ट्रेट थिंग कि लास्ट 3 मंथ्स मैंने कुछ नहीं पढ़ा है. बिकॉज आप 6 मंथ्स पढ़ लो, 6 मंथ्स पढ़ लो, उसके बाद you have time to do what you want to do, like play games, play with friends, talk to friends. So did you whatever self-talk all of this to yourself, Supratik? Did you like there were times when you must have got like there are times, Supratik, in my life I've been teaching for 13 years. I never ma'am. take holidays. And you Yes, know, ma'am. I'm like अगर मुझे कहीं पे because of my husband's job if I have to shift from one place to other, I'm so Yes, stressed. ma'am. I'm so stressed. अब मुझे वहां जाके स्टूडियो सेट करना है, मुझे क्लास लेनी है, मैं गाड़ी से कुछ कर रही हूँ, मैं वीडियो बना रही हूँ. I'm like, and I'm so overworked at times. So there are times in my life also I am thinking to myself, is it worth it? लोग अपनी जिंदगी एंजॉय भी तो कर रहे हैं, मैं इतना क्यों मेहनत कर रही हूँ? So that question comes, but then we tell ourselves no. So and then you know you have to tell, how did you self talk कि it's okay, chill हो जाएगा, मैम मेहनत कर वो लो? तो होगा क्योंकि आप लाइक मैं 9 से कर रहा हूँ तो वो फैटिग डेवलप होना इज नेचुरल. कोई अगर 9 10 11 12 कर रहा है, 11 12 जो कर रहे हैं आई वुड से दैट इज मोर बेटर क्योंकि उनका वो फैटिग नहीं है कि मैंने 9th में भी पढ़ा 10th में भी बहुत पढ़ा मतलब. तो वो फैटिग नहीं है. तो जब 12th में था तो वो थोड़ा था कि मेंटल फैटिग होता है कि हाउ मच मोर और कितना है, बस बस हो जाए, बस जो भी हो जाए मतलब कुछ भी हो. लेकिन तब वही था कि द टेस्ट आर दोस चेक पॉइंट्स. जब आप टेस्ट दोगे ना तो you get to know कि आपको कितना पता है and then you see there are deficiencies, there are those Also, deficiencies. Supratik, test से याद आया, हाँ. I wanted to always ask you this question. Did you feel jealous? Because see, वेदांतो का टॉप बैच में आप थे, तो यार वो तो हाँ वैसे भी इतना मतलब वहां तो सबका स्कोर आ रहा है. So जब हाँ आपका सब तो कैसे लगता था? How did you deal with that? It's jealousy is a very normal trait, I feel. It's also a yeah very it's over मतलब होना चाहिए because that's how we improve, right? Till the time we are not willing, not a negative jealousy, but a positive jealousy is needed. So how did you even deal with that? मैम उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो मेरे फ्रेंड्स बहुत अच्छे थे. लाइक दे वर आल्सो गुड इन स्टडीज एंड दे हैव आल्सो गॉट इन टॉप कॉलेजेस. कोई एम्स पटना में है, कोई जीएमसी सीएसटी में है, अच्छे अच्छे कॉलेजेस में सब लोग हैं. कोई एम्स नागपुर में है. तो वो लोग के स्कोर्स भी वैसे ही थे मतलब कंपेरेबल एंड समटाइम्स इवन बेटर देन मी इन दोस मॉक टेस्ट. लाइक मोस्टली वो लोग के मुझसे कभी कभी बेटर ही आ रहे थे. तो या वो फील होता है बट यू हैव टू टेक इट एज अ पॉजिटिव कंपटीशन एंड दे वर हेल्पफुल आल्सो. आपको कोई प्रॉब्लम है देन दे वर आल्सो ट्राइंग टू एक्सप्लेन थिंग्स टू मी. दे वर आल्सो ट्राइंग टू. So there was no तो bad blood. no, there was no bad blood because they were also open about sharing things with me. So उस हिसाब से it was a very good batch and जिस किसको भी लगता है कि there is a lot of negative competition, at least वेदांतु पे बिल्कुल नहीं है. आप assurance लेके चलो and the teachers also वो कभी ये promote नहीं करते कि कभी marks खराब आए तो you are like secluded from the others की
मार्क्स क्यों खराब हैं, Correct. वो वेदांतु पे बिल्कुल नहीं है. You Awesome. can be rest assured about that. Awesome. So, Pratik, one more question, which a lot of kids are asking in the chat section. देखो, Yes, when ma'am. kids tell me, and I want a very crisp answer for this, so that actionable वाला answer, टक 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 टक, ये करो ये करो ये करो, like that. So see, lot of kids say, आज से I want to start from zero. मैं आनंद भैया से motivate हो गया, मैं सुप्रतीक भैया से motivate हो गया. Now I want to start from zero. Obviously, it is not zero. बच्चों ने क्लासेस लगाई होंगी, थोड़ा बहुत पढ़ा होगा. But if Yes, from ma'am. today they want to really give their 500%, what should they do, Supratik? What are the 5, 7, 8 things according to you that anybody who wants to give their 500% from today for the next 6 months should do? Over to you. First is learn the basics, complete your syllabus. Complete your syllabus. First thing is completing your syllabus. क्योंकि उसके पहले आप ना टेस्ट दे सकते हो ना, मतलब you can't judge yourself properly. First is complete your syllabus. Be it उसमें let's say एग्जाम मई में है, let's say एग्जाम मई में है, तो अभी आपको शुरू करना है. सो इन 3 months आपको, मतलब अगर कोई अभी से शुरू कर रहा है तो यू नीड अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, क्योंकि 3 months, थ्री कम है, लेट्स से 3 कम है. सो 4.5 months में आपको सिलेबस खत्म करना है. दैट इज द फर्स्ट थिंग. Second thing is, in between, if possible, try solving tests, or try solving, if not tests, if you are not solving tests, do extensive solving of the chapters you are studying. That is the second point. Extensive solving if you are not giving tests. एक तो है टेस्ट दे लो, second point में, if either give test of the chapters you are studying or do extensive solving. And the third thing is, what you studied initially, revise that in 15 days interval. क्योंकि आपके पास वो टाइम नहीं है कि आप हफ्ते में एक बार कर सकते हो, 15 days में एक बार कर लो. सो दैट इज द थर्ड पॉइंट. तो ये 3 points को बेस करके आपके 4.5 months हो गए, सिलेबस खत्म हो गया. And then you need to give full syllabus tests. Correct. So that is the fourth thing, giving full syllabus tests regularly. Fifth thing will be revising the concepts after giving full syllabus tests and analyzing what you did wrong. So these are the things, like 5 or 6 things which are I listed out. I think this should be your priority if you're starting from zero right now. Perfect. I love the first one. Sabse important. I was writing it down. I will put it down in the comment section for everybody. Please, please, please complete your syllabus. That's the most important. Complete your उसके बिना syllabus. आप अपना ना टेस्ट दे सकते हो ना कुछ और दे सकते हो. Super amazing, Supratik. This was so nice. Do stay in touch, Supratik. Even from AIIMS and all, we'll continue to keep calling you on this channel so that you can, before the exams, 2 months, 3 months before the exam, keep Yes, ma'am. coming, motivating, inspiring kids. Can you have your mommy now? I think a lot of things that I want other kids, mothers to watch if she can come for some time. Yeah, ma'am, she's there. Yeah, I have to bring this chair with me. Okay. Yeah, I can just. Yes. Hello, ma'am. कैसे हो आप? Good to see you. I'm good, ma'am. How are you? Very good. उस दिन तो मैं आपसे मिली थी, but my God, the amount of efforts you have taken, ma'am. And that is the reason Supratik is what he is. It is just so amazing. Ma'am, over the last few months, I have personally witnessed a lot of issues where parents are very toxic to kids. Now, what is toxicity? तुझसे होगा नहीं, you are worthless, you're not going to do. I'm sure a lot of parents also go through financial crisis. By the way, you're looking very pretty. I love black and white. You're looking very pretty. Thank you so much. And you always look pretty, ma'am. Your every video, every shots, you look so amazing. Thank you, ma'am. So, ma'am, a lot of kids have trust issues with their parents. There's a lot of toxicity. Parents invariably talk about financial problems with kids. Financial problems hota hai. We all belong to middle class families. We understand sometimes up and down happens in families. I want you to be like the mother mentor. So for the next 7, 8, 9, 10 minutes, bachcho, go get your mothers, or maybe after the recordings, parents can see. What are your message, ma'am, for any aspirants parents? You are like the ideal parent for Supratik, and that is the reason why he has reached. Parents क्या कर सकते हैं बच्चों के लिए, मैम? Parents कैसे ज़्यादा involve हो? And बच्चे तो stressed होंगे ही. So how can parents, apart from teachers, how can parents de-stress kids? तो आप क्या कहना चाहोगे, मैम? Over to you.
Okay, ma'am. Okay. Ma'am, actually, here it's not only me, not the mother, it's father also. Correct. Like we both of us, we both husband, wife, like we were totally focused for his preparation. First is that we knew after class 12 he has to pursue any one of the professional college, so he has to prepare. So we were doing it right from his small classes, like he was in primary classes. Since that time only we were, especially the father at that time, he was always like, because he belongs to maths Background. subject, so he always like used to, so that's how he is also Interested in maths, he interested told me. in Yes, maths, yes. yeah, always. And whenever he is studying, he's sitting on the table, he's just on the chair, he's always with the maths book and copy. He's practicing, mama, what are you studying? Maths. He's practicing maths. So it's 7, 8, up to, it was okay. It was okay. We never stopped him. But then when he reached 9, then it was like our concern started. And my husband, like as father, he said, now he has to do something. So nearby our place, it was not that nearby. It was around 35 kilometer up and down. It was in class 10, of course, because that time he started LPSC preparation. So we wanted him any one of the coaching. So we took him there. And a weekend program we used to do. Mm, 35 kilometer up and 35 kilometer down. We used to do that in the weekend, 2 days, Saturday and Sunday. So that's how he did. But it used to be very, very hectic. And anyways, that he did it, and he scored good in NTSC. We were very happy. And after the board exam, there was a lockdown because of the pandemic. And then class 11, it was like, as he also I think mentioned, his class 11 preparation was like very horrible. Yeah, so yeah, and that time it was very difficult time for all three of us. Used to sit down at home, now what to do and what not to do, but he was doing his preparation and we were always with him. And yeah, as you said, what as a parent you used to do, ma'am, literally we used to sit with him. We were Wow, wow. we were not doing anything. We were not Correct, teaching him correct, because he himself was very focused. So correct, we used to sit with him. We correct. used to sit with him, if possible, like uh, Just up to be there. one, That two, support is needed to the रात के child. 1-2 बजे तक भी we used to sit. Wow, Either father is sitting or I'm sitting, wow. like, yeah, it used to be like that. And yes, his studies were, we never used to tell him कि mama पढ़ने बैठो. ये तो था कि he used to do himself. कभी सेल्फ never मोटिवेटेड था, never कभी that बोलने की time जरूरत ही today. नहीं पड़ी. Yeah, we never said that. But yes, mm, to support him, like, we were both always together. And every time to motivate him, though he knew that mama is doing it purposely, intentionally, like that. But I always used to say, and today somebody said, okay, something, you are doing so good, you have done so well, agar hua bhi hai nahi bhi hua hai na, so I used to come and tell. So So nice, such positive motivation, ma'am. yeah, That's so yeah. nice. And then, to be very frank, since the time he joined Vedantu, then to feel like it was more. Whatever we were doing, it was like double of that. And as he Wow, showed the diary, I think I'm also going to show you the diary again. And that diary I started maintaining, ma'am, wow, because it was wow. really, I've never seen, matlab, मैम, I've been teaching for 13 years. एक और मैम थी बहुत पहले, उनका बेटा अभी एमडी साइकेट्री कर रहा है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से. माय फर्स्ट बैच, शी हरसेल्फ वाज अ डॉक्टर, शी वाज अ गायनेकोलॉजिस्ट, मैरिड टू एन ऑर्थोपेडिक सर्जन. देयर one daughter did MBA from Harvard, and another son was in India, MBBS, government college, MD government college, went abroad also, in one of the topmost clinics of the world. But she used to do the same thing. She used to come mm, and mm. हमारे Every top, day something, yeah. she used to call Mm. us, she used to sit with Uh-huh. us,
She used to discuss everything. She used to maintain diary. आज किरत ने कैसा किया, आज कैसा किया, आज Yes, कैसा किया. yes, अब ma'am. Yes, exactly ma'am. like you. Ma'am, yeah, ma'am, I इस डायरी में 96 chapters, 11, 12 के 96 chapters पूरे लिखा है मैंने. And after that, what and not only the chapter, उनके sub topics भी लिखे हैं मैंने. उसके बाद every day I will ask him, today is the date, इतना, say for example, यहाँ से I have started, you know, कि आज के डेट में आपने कितना कंप्लीट किया है और कौन सा टॉपिक रह गया है, एंड टुमारो व्हाट यू हैव टू डू. पूछते हैं तो बच्चे ऐसे हो जाते हैं मेरे को तो सुप्रातिक, द ब्यूटी इज you never thought that mama is questioning you. नहीं, she just kept a record. Yeah. इसमें ये नहीं था कि it wasn't rigid कि करना ही करना है. अगर कर लिया ठीक है, नहीं हुआ do it next day. Yes. It wasn't rigid. I used to ask him कि till now 15 July है तो NCERT बायोलॉजी का कितना चैप्टर आपका हो गया है, उसमें कितना आपको क्लियर हो गया है, any doubt you have there, that I used to keep a record. Wow. And then after 1 week, I will ask that topic which was not clear, is it clear now? Then I will tick mark, हाँ ये हो गया है. Now the next topic I will go into. Wow. So yeah, so like that for every subject I used to do, and yes. And then determination level आग बना रहे हैं. Kids are like so excited to wow. Ma'am, were you scared also? आपको कभी बीच में डर लगा होगा सुप्रातिक का, नहीं होगा? How will he feel? Did you have some of your inner battles? I was confident. No, ma'am. I was very, very confident that he will do it. I knew. He will get through. I knew. But to the better, I was telling him कि बेटा करना तो सब करते हैं. 650 से 660 लेकर आते हैं. 660 से 670, even better. Yeah. And today I have no regrets. Yes, there were 4 questions. He could not. He did it right in the question paper, ma'am. उस अभी भी question paper रखा हुआ है. नीट के एग्जाम के दिन उसने वहाँ पे कर दिया. हाँ, उसने क्वेश्चन पेपर में आंसर करेक्ट किया है, but that he had a doubt, so those 4 questions he kept it for the end to do, and पता नहीं उसके दिमाग में क्या आया है इसके दिमाग में, and then what he did, वहाँ पे उसने अलग mark करके आ गया. So because of those 4 questions, otherwise he would have been AIIMS Delhi, that I knew, but still I no regrets, ma'am. No, I'm very happy, glad that he's got AIIMS Rishikesh. So yeah, so like I have that. one more question to ask you, ma'am. Yes, I know time हो गया, but I want to really ask you. No, it's absolutely fine. Ma'am, देखो ये कह रहा था कि 4 साल you didn't go out. I think that is hats off. That is hats off. मतलब I can't imagine, because so many times my parents are under pressure. They keep telling me अभी यहाँ शादी है आजा, and I tell them, I said अभी ना ऑफिस में छुट्टी नहीं मिल रही है, बहुत काम है. Then they tell me, like today my mother was telling me one of my cousins is getting married in January, so she was telling me देखो अभी बता रहे 2 महीना पहले छुट्टी ले लेना, you have to. But how did you overcome this societal pressure which was on you also, ma'am? That you must have not gone to your brother's or sister's place. Sir must have not gone to his family. How did you that is phenomenal, ma'am. That is just hats off. How did you do this, ma'am? Yeah. So, ma'am, it was let me tell you, class 8, when he was in class 8. After class 8, इसका वो क्या बोलते हैं, जनेऊ होता है मैम. हाँ, जनेऊ, yes. जनेऊ, हाँ, इसका जनेऊ सेरेमनी था. Correct. तो after 8th class समर वेकेशन में हमने इसका जनेऊ करवाया. That was done in Calcutta. Correct. And my in-laws place. Correct. His father's place. So उसके बाद जब हम वापस आए हैं, उसके बाद after NEET exam. Wow. Means 2022. When it is? No. 2017 से लेकर 2022. 2017 से लेकर 2022 उसका नीट खत्म हुआ, और उसके नीट खत्म हुआ 17 को हुआ था. 18, 19, 20 we went to my mother's place because it is overnight journey from my place to my mother's place. Correct. मतलब 17 से लेकर 22 जो कि मेरा घर ओवरनाइट जर्नी है मैम ओनली. और अपने व्हीकल में अगर हम जाते हैं तो सुबह वी स्टार्ट अराउंड 4-5 वी रीच, वी डिड नॉट गो. वाओ.
We But did hats not off go. to your sacrifice also, ma'am. Hats off to your उसके बाद sacrifice. yes, and father's place also we did not go. और अभी तक भी नहीं गए हैं. Correct. अभी तक भी नहीं गए हैं. We are waiting whenever the we'll get a opportunity, we will go. And here also in local where we are now right now Big Boy, शादी वगैरह मम्मी ने कुछ अटेंड नहीं किया. किसे लोकल में हमारे यहाँ पे जो भी है सोसाइटी में शादी वगैरह होते थे. I never visited, no puja, no shadi, no birthday, nothing, man, और nothing. मैम मुझे भी लाइक एज गैदरिंग्स मतलब इतना हाँ, पसंद नहीं है he also- पार्टीज he एंड also does वेडिंग. like. तो मतलब मैं नहीं जाता था तो मॉम भी नहीं जा रही. So, ओनली पता डैड मैम यूज्ड टू बच्ची गो. क्या लिख रही है? I think my mama is talking to Vani ma'am. This is just same schedule as in our home when my sis was preparing for her NEET exam and now she's in best MBBS Government College Mumbai. Wow, so much sacrifice, ma'am. So I'm hats Yeah. off. We didn't go, and because घर का एक family member should go, so I used to send sir, I mean my husband, Correct. कि आप जाकर visit कर लो, because I have to be with him. So yeah, we have never been any place. उसके साथ बैठना है, and in a day I have to spend with him 1 hour regarding not like खाया पिया नहीं, वो नहीं, regarding the academics. I have to sit with him कि आज का डेट का जो टारगेट था that is done or not. आज का डेट का एनसीईआरटी में कितना हुआ, कोचिंग में कितना हुआ, पर्सनल तुम्हारा प्रिपरेशन कितना हुआ. For that 1 hour I have to sit with him. Wow. At So least 1 hour. understanding. So At nice. least 1 hour. So yeah, that used to be Ma'am, I will take one more hour from you and we will Yes. do a parent workshop, ma'am. I Yes, want you to sure. do a parent workshop. We'll only call parents, we'll get it registered, and we will have you run the workshop for all the NEET aspirants of NEET 2023, ma'am. This is, I've never seen a parent like this, ma'am. Because parents कहते थे पढ़ता नहीं है, ये ऐसा है, वैसा है. I'm sure everybody's parents sacrifice, my parents sacrifice, and everybody's. But the kind of dedication you have shown, ma'am, is next level. I mean, like. Ma'am, actually, that only I also feel like parents always complain that मेरा बच्चा पढ़ता नहीं है, मेरा बच्चा पढ़ता नहीं है, he's not studying. They always complain to the teachers. Correct. But what are you doing for your child? Correct. That is also important. Wow. I Because want you to do this, ma'am. Yeah, It's day such and a night good you are social staying with the initiative. child, Yes. not the teachers staying. Correct. Teachers are there to take the class for hour, 1 hour, 2 hour, that's it. Correct. But yeah, But so the आप क्या whole कर day रहे हो अपने activity- बच्चे के लिए? Exactly. Yeah, that is also very important. That is actually 50% is that, and 50% bachas and teachers whatever they're doing. Correct. I guess, yeah. एंड मैम जब मैं देखता हूँ कि मॉम इज टेकिंग सो मच पेन टू डू सच, It inspires you so much. या कि मुझे भी पढ़ना चाहिए. Correct. लाइक एंड ऑल्सो द टीचर्स वेदांतु के आई वुड लाइक टू मेंशन, वो लोग मतलब आप तो जानते हैं, रूहानी मैम को Correct. जानते हैं, आप विपिन को Correct. जानते हैं. रूहानी मैम रात को 1 बजे 12:30 बजे तक क्लास ले रही हैं, तो वो हमें वो खुद को लगता है कि टीचर इतना कर सकता है. when a teacher is taking so much pain, like मैम पूरा दिन क्लास करके थक के फिर भी हमारे क्लास ले रही हैं एक्स्ट्रा, उसमें ऐसा लगता है कि हमें भी करना चाहिए. Correct. क्योंकि मैम हैज सम फेथ इन अस, दैट्स व्हाई मैम इज टेकिंग द क्लास. वी हैव टू रीपे द फेथ. Correct. Nice. And also like ma'am, motivation, we always talk about motivation. Correct, कि ma'am. हमें कहाँ से motivation मिलेगा, कहाँ से. Motivation is not the such thing that you automatically get. Correct. You have to acquire it. You have to Best. take it, I guess. Yes, ma'am. तो Yes, ma'am. तो here I will mention your name, ma'am. आपका मतलब मेरे जो YouTube है, I think that YouTube used to be always for the NEET thing. From anywhere I used to get NEET Information, regarding yes. the NEET something. I'll see. इसके पास तो mobile we never used to give him. So anything which is to come, I used to immediately show him. Look, this is the way teacher is saying. Look, this is the way ma'am is saying. So I definitely used to show him that. Correct. So it's up to you how you take it and you inculcate it in yourself. And also ma'am, abhi I think this video is live on YouTube. Correct. And YouTube personally मैं use करता था. I used to use used to see NEET related, football related such things, and because I used to like football, so मैं कोई channel subscribe नहीं करता था. Like पता नहीं, ये मुझे मतलब लगता था कि I shouldn't subscribe any channel.
So mom ने क्या किया एक दिन, I told you that in Bangalore कि मतलब मैम मम्मी देखती थी वी बायोटॉनिक एंड अदर नीट चैनल. सो मम्मी ने क्या किया कि मेरा मोबाइल दिया, मतलब जो मैं कभी कभी देखता था उसमें, और उसमें वी बायोटॉनिक सब्सक्राइब कर दिया, क्योंकि स्मार्ट. एंड उससे मैंने मतलब आपका वीडियोस देखना स्टार्ट किया, एंड दैट वाज इवन बिफोर ज्वाइनिंग वेदांत, लाइक related to NEET कि हमें अभी NEET के लिए पढ़ना है. So something, whatever the information we are getting about NEET, that we have to take it from somewhere. There has to be a certain source. And आप तो मैम उस रिगार्ड में काफी रेगुलर हैं. Like आपसे रेगुलर तो शायद कोई है ही नहीं YouTube पे, इतने आप वीडियोस बनाते रहते हैं. So मतलब वो रेगुलरिटी इज समथिंग कि स्टूडेंट को भी लगता है कि हमें भी मतलब लाइफ में इतना रेगुलर होना है, हमें भी डेली पढ़ना है. आप डेली वीडियो बना रहे हो, आप डेली क्लास ले रहे हो, स्टूडेंट को भी डेली पढ़ना है. सो दैट इज आल्सो पॉइंट ऑफ मोटिवेशन दैट वी गेट. Each video, each shot is so relative, so relative. I find like your every videos now, it's so good. Thank you, ma'am. But really, matlab, I'm looking at both of you and I'm just having this vision that, you know, how family comes together as a unit and then the child performs. So such an important role by parents, and obviously teachers have to play a role academically. You know, institutes have to play a role, but then nurturing has to come from a parent. That is. Yes, yes. Supratik, I'm so happy, so proud of you. You are going to one of the best institutes. You will really learn a lot, enjoy a lot, and grow and become, I hope, pray that you become one of the world's most famous, most importantly, most kind doctor. Heal people, Thank you, heal ma'am. patients, and do a lot of magical stuff, and someday maybe Yes, become a ma'am. Bharat Ratna and things like that. God bless you. Thank you, So ma'am. nice. Thank you. Thanks a lot. Thank you so much, ma'am. I have Thank Supratik's you. number. Thank you. I will get in touch with you. And Supratik, share your mama's number. Let's do a parent Yes, ma'am. workshop, ma'am. I'll get in touch Oh, with you. We'll sure. chat on WhatsApp, and whenever you are free for 1 hour, we'll call Yeah. all the parents and let's do Yeah. a super parents workshop. Sure, sure. That'll be so nice. Bye, ma'am. Thank you so much. Bye, Thanks, bye. Supratik. Thank you. Thank Bye, you. ma'am. Thank you. Thank you so Bye. much. So much. Bye.